Our unit number 3 is coordinate geometry and applications. So we will be learning the three-dimensional coordinate system. In that we will learn different coordinate systems like Cartesian, cylindrical and spherical. As well we will learn the conversion from one coordinate system to another coordinate system. And we will see the applications in the electromagnetic field. So very small unit is there. So before we start our actual syllabus, we will start with the two-dimensional. So this is a two-dimensional coordinate Cartesian coordinate system. We have x here, y here. You are already familiar with this. Suppose I have one point P 3, 4. I have one point P 3, 4. So this is one point here. So here x-axis distance is 3 units and y-axis distance is 4 units. And here is the location. We have point P 3, 4. Then one more coordinate system is the polar coordinate system. In that the variables are r and theta. So what exactly this r is? So r is the radius, or you can say it is directly connecting from origin to point P. This distance is the r. From origin to the point P, the distance is nothing but the r. And theta is the angle formed by the x-axis. This much is the angle has been formed from the x-axis. So this is the polar coordinate system. Then conversion from Cartesian to polar for two-dimensional. So what is the conversion? R equal to under root x square plus y square. Here x is 3, y is 4. So 3 square plus 4 square. That means 5. And theta is tan inverse y by x. Y is 4, x is 3. So tan inverse 4 by 3 is the theta angle. So this is how we convert it into from Cartesian to polar in the two-dimensional. This is the conversion in from Cartesian to polar in two-dimensional. I hope you are familiar with this. Okay. XY axis. This is two-dimensional because we are just considering two axes, x and y. अभी तक आप लोग इससे शायद familiar हो गए ये सब चीजें से. If you are familiar with all these, please reply in the chat box. With C. If you know this coordinate system, yes, you already know all this. So now we will be discussing three-dimensional coordinate system. We will be discussing three-dimensional coordinate system. So in three-dimensional coordinate system, this is x, this is y axis, and this one is the z axis. It will go like this. This will also continue. Minus y axis, this is a minus y axis, and this one is minus x axis. Okay. Then suppose if you want to locate any point, so now you think that you are in a one room. You are present in one room. Okay. So you take any corner of your room. You take any corner in the room. So that you treat as origin. From that corner, you can see that in the room, you take one corner. That corner will be the origin. And you can see that this type of axis you can see. Okay. तो जो आपके घर ऊपर की तरफ जो जा रही वो रह रही है, that will be the y axis, and two lines that are going are the x axis and y axis. And these are hidden because you are in a one room, and these things are you. These outer, these minus portions, these are hidden to you. Now in the room there might be some switches, right? Suppose यहाँ पे एक आधा switch है, so you can locate that point.
Now there can be some more switch at the other direction, or something is kept in the other direction. You can locate that point also. Suppose it is over here in the yz plane. तो ऐसे आप पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं एक्स वाई एक्सिस में, एक्स वाई जेड एक्सिस में. नाउ व्हाट वी विल सी, first we will see the range of this x. X range is how much? Minus infinity to plus infinity. Y range is minus infinity to plus infinity. Z range is minus infinity to plus infinity. In reality, this is the range. Now for the location of any point, you can take one switch in the room. आप उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ कैन यू टेल मी, in the room how many surfaces are there? How many surfaces are there in the room, in one particular room in which you might be sitting? So how many surfaces are there? So total number of surfaces are 6. 4 दीवार हो गई आपकी. ठीक है. एक ग्राउंड फ्लोर हो गया और एक सीलिंग हो गई. So there are total 6 surfaces. So this is the room. So 1 2 3 और 3 हिडन रहेंगे. So there are total 6 surfaces. Now the differential surface area. Suppose I have one point in the coordinate system, this P point. If I extend this point P in all 3 directions, I may get P dash here. तीनों डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट की, तीनों डायरेक्शन में थोड़ा सा एक पॉइंट को एक्सटेंड की. इन ऑल 3 डायरेक्शंस वी एक्सटेंडेड दिस पॉइंट. So what will happen? This type of tube, or you can say parallelopipe, has been formed. It has total 6 surfaces. और आप रूम के भी सरफेस देख सकते हैं. 4 दीवार हो गई, 4 दीवार हो गई, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया. टोटल 6 surfaces are there. Then this area will be, this one particular area will be dx dy, another area will be dy dz, another area will be dz dx. So these are the surface area. This is the surface area, and the volume of this differential point will be given by volume equal to anyone. What will be the volume? Dx dy dz, dx dy dz. This will be the volume of that parallelopipe or that tube. Okay. Now आप जो आपके रूम में बैठे हैं, उस रूम से आपको अगर कुछ तो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लोकेट करना है. सपोज आई हैव वन पॉइंट P, it is nothing but 1 2 3, and I have one more point Q, it is nothing but 2 minus 2 1, and I want to find out distance PQ. So how you will find the distance between point P and point Q? Formula is very simple. So distance equal to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square. तो x में से x को सब्सट्रैक्ट करो, उसका स्क्वायर प्लस y माइनस y, सब्सट्रैक्ट एंड गेट स्क्वायर, z minus z, subtract and square and take the under root. So what is the answer for this one? I am waiting for your answer, and please keep calculator. For today's class we will require the calculator. So what is the distance PQ, anyone? So 2 minus 1 square plus minus 2 square, because here it is minus 2, here it is 2.
-2 minus 2 square plus 1 minus 3 square. So this will be under root 21. Under root 21. So 1 plus minus 4 square is plus 16 plus 4. That means under root 21 is the answer. So this is the distance between 2 points. So you can take any examples like that. And simple 1 mark question can be there, like what is the distance between 2 points? Now tell me, suppose if P is 0 to 4 and Q is -2 0 4, then what is the distance? Tell me the distance PQ. Under root 8, that means 2.8. So this is how we calculate the distance in 3-dimensional. Now can you tell me it is which plane? Because to solve the electromagnetic problems, the concept of coordinate geometry must be clear. X, Y, sorry, here X, this is Y, and this is Z. So can anyone tell me it is which plane? This is X, this is Y, this is Z. So this one is the YZ plane, or you can say that this is nothing but X equal to 0 plane. This is X equal to 0 plane. Similarly, this one, this plane is XY plane or Z equal to 0 plane. Then this plane XZ plane and Y equal to 0 plane. Okay, so you should be able to see that it is which type of plane. You should be able to imagine. Suppose I ask you, what is Z equal to 2 plane? Z equal to 2 plane. So you also imagine अगर Z equal to 2 का प्लेन कैसा रहेगा? In your notebook you also try to draw X, Y, Z. तो ये था हमारा Z equal to 0 plane. This one is the Z equal to 0 plane. तो इसके पैरेलल ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, और आपने ऐसा एक ड्रॉ करना चाहिए. आई कैन नॉट ड्रॉ इट हियर लाइक दिस. इसके पैरेलल रहेगा. इसके पैरेलल यहाँ पे एक प्लेन बनेगा and this will be the X Z equal to 2 plane. This will be Z equal to 2 plane. It is parallel. These two are parallel. तो आपका जो नीचे की जमीन है, ग्राउंड फ्लोर है, उसके पैरेलल एक 2 यूनिट डिस्टेंस पे एक प्लेन बनेगा. दैट विल बी द Z equal to 2 प्लेन. आपका जो ग्राउंड फ्लोर है, आप जो कमरे में है, उसके पैरेलल, ग्राउंड फ्लोर के पैरेलल 2 यूनिट पे, ग्राउंड लेवल से 2 यूनिट पे एक प्लेन बनेगा. दैट विल बी Z equal to 2 प्लेन. So you should be able to imagine the which plane it is. Okay, so your ground floor is the Z equal to 0 plane. Now imagine that you are in a room
ग्राउंड प्लेन इज द z इक्वल टू 0 प्लेन. आपने जो ओरिजिन लिए थे, जो कॉर्नर कंसीडर किए थे रूम का, ठीक है, उसको लग के दो दीवार होगी, उसको लग के दो दीवार होगी. तो एक दीवार जो है वो दैट इज द yz प्लेन, और ग्राउंड फ्लोर z इक्वल टू 0 प्लेन. दिस वन, आपने कॉर्नर लिए थे ना रूम में, yes or no, you have taken one corner in the room, so ground floor is nothing but z equal to 0 plane. Ground floor is nothing but z equal to 0 plane. और जो बाजू के दो दीवार है, वर्टिकल जो दीवार है दो रूम के, वो कौन से प्लेन हो गए? एक होगा y इक्वल टू 0, एक होगा x इक्वल टू 0. one will be x equal to 0, one will be y equal to 0. Okay, I hope you are able to imagine. We are in one room, take the corner of that room, that is the origin. जो नीचे के लाइन जा रही वो x, y, ऊपर जो एक लाइन जा रही वो कॉर्नर से, दैट इज द z. ग्राउंड फ्लोर इज द z इक्वल टू 0 प्लेन. एक भिंत रूम में की एक दीवार, वो रहेगा x इक्वल टू 0 प्लेन. एक दीवार रहेगी y इक्वल टू 0 प्लेन. So these are all imagination part. You should be able to imagine. Then this x, y, z are, okay, what is angle between x axis and y axis? X axis and y axis angle 90 degrees. So these are orthogonal to each other. These are orthogonal to each other. That's why this forms the vectors also. Ax, Ay, Az. So Ax cross Ay is Az. अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यू गेट दी अनदर वेक्टर. This much knowledge you must have. So see that we have covered so many points. We have covered the planes. Then we have seen how to find out distance between 2 points. Then range of x, y, z, volume, differential volume, then surface areas. क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब स्टडी करेंगे आपको ये सब पॉइंट्स, यू विल रिक्वायर ऑल दीज पॉइंट्स. Okay, now we will move to the second coordinate system, that is nothing but cylindrical. So please tell me whether you have any knowledge about cylindrical coordinate system, earlier knowledge. Or this point is new to you? If it is new, then reply in chat box with N. If this you already know, then reply in chat box with A. Okay, this point is new to you. Okay. So we will go slow. So in the Cartesian coordinate system we have x, y, z, and in cylindrical coordinate system we have rho, y, z. तो चीजें समझने की कोशिश करो. व्हाट इज रो, व्हाट इज फाई, व्हाट इज जेड. ठीक है. So I will first write the range. So question can be what is the range of rho, what is range of phi, what is range of z. So your rho is the 0 to infinity, phi is the angle 0 to 2 pi, and z, it is similar to the Cartesian coordinate system. Z is same as our Cartesian coordinate system, and its range is minus infinity to plus infinity. Its range is same, minus infinity to plus infinity. तो आप लोगों ने सिलेंडर देखा है, सिलेंडर. Then you might have seen another example of cylinder is a pipe. थोड़ा बड़ा पाइप देखो, अंदर का शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप है. इट हैज अ शेप ऑफ सिलेंड्रिकल. ओके, so that thing you have to imagine. This thing you have to imagine. So please note this.
range of rho phi z. The representations are rho phi z. Then this is x, y, z. I have one point here, P. Suppose it has x value, some random point in the space. Some random point in the space. ये कोई दीवार का पॉइंट नहीं है, एक रैंडम पॉइंट है आपके कमरे का. सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 4. These are the coordinates. Then in cylindrical, how you will represent? Rho phi z. ठीक है, तो z आपका सेम है. Your z is same. So z will be z only. That is the 4. Now rho. अब ये रो क्या है? ये p पॉइंट को आप नीचे लेके आ जाओ. एक हवे में एक पॉइंट है आपके कमरे में, एक हवे में पॉइंट है, ठीक है. उस पॉइंट को आप स्ट्रेट उठा के नीचे लेके आ जाओ और जमीन पे रख दो. वो पॉइंट रख दिए तो वो पॉइंट कहाँ पे आ गया? अभी ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब एक्स वाई प्लेन पे आ गया. एक्स वाई प्लेन पे आ गया वो पॉइंट. यस और नो? क्या किया आपने? एक पॉइंट कंसीडर किए रूम के अंदर. अब उसके रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन से, रो फाई जेड. तो आपको पहले समझना चाहिए रो क्या है, फाई क्या है. वो चीज समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप उस पॉइंट को उठा के नीचे लेके आ जाओ. ला लिए, ठीक है. देन अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, it will form one angle from the x-axis. So that will be the phi. Whatever angle has been formed from the x-axis, that much angle is the phi. Okay, this much angle is nothing but phi. Now rho. What is rho? आपने वो पॉइंट को जमीन पे लेके आ गए, राइट. अब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, जमीन पे का डिस्टेंस, दैट इज द रो. This one is the rho. When we make z equal to 0, this is z equal to 0 plane. This one is z equal to 0 plane. When we make z coordinate at 0, z coordinate 0 मतलब ground floor. Z coordinate 0 means ground floor. तो ये जो 2, 3, 4 था, अभी इसके आपने जैसे इसको जमीन पे रखे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 2, 3, 0. यस और नो? और शाला रिपीट अगेन. इसके कोऑर्डिनेट 2, 3, 0 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस, ठीक है. ये जो रो है, दैट इज द रेडियल डिस्टेंस व्हेन द z coordinate is 0. Whenever the z coordinate is 0. तो पता चल गया आपको रो के फाई क्या है? एंगल एक्स एक्सिस से एंगल. रो इज द व्हेन वी मेक z coordinate is 0, so that thing is nothing but rho. Actually rho will be, now it is similar to your r in the polar coordinate system. So rho value will be 2 square plus 3 square under root, and z coordinate is 0, and z is your same axis, minus infinity to plus infinity. Okay, so now I will explain you with some image what exactly this rho phi and z is. So this is the xy axis, xyz axis. ये एक पॉइंट है P. दिस इज वन पॉइंट P, ठीक है. तो रो देखो ये नहीं है, यहां से यहां तक आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये ऐसा जोड़ने वाले को रो नहीं बोलते. यही आपका गलती हो जाती. स्टूडेंट्स फील दैट by joining this from the origin, this distance is different, and this distance is different, this distance is different, and this distance is different. So rho, what is rho? It is this distance when we make z equal to 0, when we make z equal to 0. तो ये आपका रो डिस्टेंस.
ठीक है। और फाई क्या है, व्हाट इज फाई, आपको क्या दिख रहा है फाई, यहाँ पे दिख रहा है आपको लोगों को फाई, व्हाट इज फाई, इट इज द एंगल फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना पॉइंट पी ने, एक्स एक्सिस से एंगल बनने वाले को फाई बोलते हैं। एंड जेड इज सिमिलर, z is the similar to our xyz coordinates. So I will try to explain once again. तो ये एक सिलेंडर है, दिस इज वन सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर एक आधा पॉइंट है, here is one point in that cylinder, rho phi z, तो phi is the angle from, ये पॉइंट को नीचे लेके आया यहाँ तक, तो phi is the angle here from the x axis, rho is this radial distance, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग है, ये जो पिंक कलर का है और ये जो ग्रीन कलर का है, these two distances are different and z is the same point, that is nothing but z. So now what is the relation, x equal to, suppose I provide you cylindrical coordinates, you should be able to determine the Cartesian coordinates. So x equal to rho cos phi, y equal to rho sin phi, and z equal to, what is z, what is z, what is z, z, what is z, z only. Okay, so this is the conversion from cylindrical to Cartesian. Cylindrical दिलेले असेल तुम्ही Cartesian find out करू शकता, x y z. This is the conversion from cylindrical to the Cartesian. Okay, next conversion will be Cartesian to cylindrical. Means x y z आपल्याला दिलेले आहेत, x y z are given and we have to determine cylindrical coordinates rho phi z. We have to determine the cylindrical coordinates rho phi and z. Okay, so the formula is very simple, rho equal to under root x square plus y square, phi equal to tan inverse y by x, and what is z, what is z, what is z in the cylindrical and in the Cartesian, what is z, what will be the conversion, z equal to z, z equal to z, simple. ठीक है, so please note this formula, x equal to rho cos phi, y equal to rho sin phi, z equal to z, or if x y z are given, rho equal to under root x square plus y square, phi equal to tan inverse y by x, z equal to z. ठीक है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो प्लीज कीप कैलकुलेटर, प्लीज कीप कैलकुलेटर, सपोज एक्स वाई जेड आर -1.6 1 -1.86 -4 2, ठीक है, व्हाट विल बी रो फाई जेड, व्हाट विल बी रो फाई जेड, वन बाय स्टेप जाएंगे, पहले रो फाइंड आउट करो, पहले रो फाइंड आउट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट रो, फर्स्ट यू फाइंड आउट रो, please keep calculator today and in the future classes also. Sakshi, please take answer. Under root
1.86 minus 1.86 minus, sorry, minus 1.86 square plus minus 4 square. So 1.86 square plus 4 square 16. So it comes out as 4.41. 4.41. Yes. चलो pi minus 65.06, 65.05. Okay. चलो हो गया आपका आंसर 65.05. तो आप लोगों ने क्या किए, tan इनवर्स -4 अपॉन -1.86 माइनस माइनस कैंसिल कर लिए, tan इनवर्स 4 अपॉन 1.86 का आंसर निकाल लिए जो कि 65.05 है और जो कि गलत है, जो कि गलत है, दैट इज द रॉन्ग. ओके. चलो पहले ये देख लो आप कि आपका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस वन इज 270 डिग्री, अगेन 0 डिग्री. एग्री. अब आपका पॉइंट क्या था, आपका पॉइंट था -4 -1.86. तो ये -4, वाई एक्सिस का डिस्टेंस -4, एक्सिस का डिस्टेंस -1.86. तो ये यहाँ पे लोकेट होगा वो पॉइंट. तो ये आपका पॉइंट था वो इन द एक्स वाई प्लेन. अभी एंगल किसके किसके बीच में दिख रहा है आपको, 180 और 270 के बीच में. यस और नो. हा तुमच्या पॉइंटचा अँगल तुम्हाला किती दिसतोय, इट इज बिटवीन 180 अँड 270 डिग्री. So in this case, what you need to do, whenever the points are in third quadrant, the formula is pi minus, sorry, minus pi plus tan inverse y by x. Now tell me the answer. Whenever the points are in the third quadrant, angle will be between 180 and 270 degree. Now what is your answer? In third coordinate, the angle formula is this, -115 डिग्री. आपका पहले 65 आ चुका था, -180 plus 65, that means -115 degree. So this is the angle, -115 degree, or you can say -115 or plus 360 कर लो. 115 -115 plus 360, तो ये कितना हो गया, एनीवन? -115 plus 360, 245. तो ये देखो 180 और 270 के बीच में है एंगल. ओके. तो tomorrow I will give you in more detail. If the points are in first coordinate, we take simply tan inverse y by x. If points are in third coordinate, we take minus pi plus tan inverse y by x. और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का कल मैं आपको डिटेल में दूंगा. एक प्रॉब्लम अभी इसका सॉल्व करेगी, कार्टिशियन से पोलर का, कार्टिशियन से पोलर का सॉल्व करें. सपोज कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स आर
Cartesian coordinates are 4, 3, minus 3, 4, 3, minus 3. So what will be rho 5z? What will be rho 5z? अभी भी कार्टेशियन से पोलर का ही सॉल्व किए थे क्या? ओके, नो इशू. Tomorrow I will give you more homework on this same type problem. So now these 4 and 3 are in the first quadrant. So now you can use tan inverse y by x. So what is rho? Anyone? Rho equal to 5 under root 3 square plus 4 square. That means 5. 5 will be tan inverse 4, 3 by 4. Y is 3, x is 4. So tan inverse 3 by 4. 36.86. And z will be minus 3.